Last class, we were discussing about tense patterns. I think almost all of you are present last classes. Acha, who are new? Raise your hands. Number 1, 2, 3, 4, etc. So last class, we were discussing about अच्छा इंग्लिश टू इंग्लिश टिके डिफिकल्ट होची कि टिके टिके ओडिया कहउथिबे ओडिया टिके टिके कहउथिबे हां कहना मु कहली लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड तमे झियटी हाथ टेक दिला नहीं अच्छा एनीवे now since this class is English class, so always let us try to be like be conversant with English, all right, so that you will be developing spoken English as well as vocabulary. So last class we discussed about those who are new. So last class we discussed about tense patterns. This is there in the syllabus, chapter 2, tense patterns, unit 1. All right, open your book. Those who have books, please open your book. Chapter 2, tense patterns, unit 1, the present simple and present progressive. All right. So those who are new, so now let us see. We were discussing about present simple. Present simple and present. All right. So those who are new, so concentrate on these two tense patterns. The first one is present simple or vice versa. Vice versa माने कौन? उल्टा, है ना? Whatever time the word सीखी जाओ. Vice versa माने उल्टा. Present simple or we can say simple present. And present progressive. So present simple means like suppose I teach in the classroom. I teach in the classroom. I eat rice every day. All right. Like I drink milk every day. I do my work honestly. So these are simple present. Why simple present? Because here like there is no question of any helping verb, nor there is no question of any vocabulary. So that is that this one comes under simple present. The next one is like next one is present progressive. So present progressive means anything which is progressive, developing, continuing. बुझी पारलो? आमे जो जनरल इंग्लिश रे जहा कहू कि ओडिया रे आमे कहू माने कोन जोटा कि डेवलप करूची, प्रोग्रेस करूची, कंटिन्यू करूची. So that means present progressive means suppose now I am teaching in the class. All right. So that means just few minutes back I just started and I'll be teaching. I'll be teaching means it is in continuous position. So since it is in continuing position, what I'll be saying that I am teaching in the class. So this is present progressive. Why present progressive? Because now at present I am teaching in the class. Suppose like before 2 hours or before 1 hour I was teaching. So there I'll be speaking that I was teaching in the class. But present progressive means you have to mark two things present. So I am teaching. I am teaching. So here am is the verb, teaching is the action verb. All right. Now, so present progressive indicates that anything. Now suppose you all are like what? Learning, studying, or let us say you are listening. So that means at present you are listening. So this comes under present progressive. Present progressive or present continuous means it is in continuing position, nor it has finished, nor it is going to just end before some time.
means there is no fixed time interval. It is just continuing. So that is why it is known as present progressive. And substitute meaning of present progressive is present continuous. Present continuous or present progressive. All right. So now this first one and second one, like on the basis of first one, second one, this question have been fixed. So now let us see activity 1. Study the sentences below and fill in the gaps using the present simple progressive form of the verb in the brackets as required. So now you saw last class we discussed the boy next to door. The boy next door dash the plants now. Huh? Is watering. एठी वाटर कौन है गला वाटरिंग ए एमते सेंटेंस आगुरु सुनिच ना सुनना सपोज आई एम वाटरिंग द गार्डन इज वाटरिंग एठी वाटर टा कौन है गला वर्ब है गला एक्चुअली वाटर टा कौन नाउन किंतु एठी वाटरिंग जतबे है गला वाटर टा है गला वर्ब द प्लांट्स नाउ बट ही नॉर्मली डैश इट इन द इवनिंग. Now next, my sister dash badminton now. He is playing, but she does not play here every day. Very good. She does not play every day. So those who are new to this class, when there will be third person singular number, we will have to put does. He goes, she goes. Why third person singular numbers? Last class I had already told. See third person, how to understand third person. Suppose I am talking to you all. That means I am the first person. You all are second person. Suppose I will be saying she is sitting there. Alright. Can I say she is sitting there? You all are sitting there. But to her, we can say she is sitting there. So I am the first person talking to the second person, see the third person, that is a third person singular number. In third person singular number, we will have to substitute she, goes, does, etc. Then next, my brother does search for his pen. He is searching for his pen. He often does misplace it. Miss? Correct. Then D, we dash ready to go to school. We are getting ready. We dash go अच्छी भाद्रे to school every morning. I usually dash reading books. I usually enjoy, but I does not enjoy this one very much. Then next, my grandfather rarely carry an umbrella. Carries, huh? But he does one now because there are dark clouds in the sky. All right. Then next, I'm sorry, but you cannot see the minister. He does till, although he usually does wake up very early. He does sleep. He is sleeping still, although he usually wakes up very. The next, Hari does his homework. His brother who always does work very fast. Achha, now let us go to activity 2. Activity 2, the time is 8 p.m. Everyone in your family is busy, but each person is doing something which is different from what he oblique she usually does at this time. The members of your family, including yourself, are listed below. Write what each one of them is doing and also mention what they usually do at this time. One example have been given.
See, father is having a chef, but he usually goes for a walk at this time. Acha, father is having a chef means what? Father is having a chef means, अच्छा के न बुझी पाइले सेंटेंस ता कहलो, father is having a chef. सपोज आमे खाइबाटा को कोन को, खाइबाटा को आमे कहू हाफ हाफ हाफ, हाफ रो ओडिया रे मीनिंग होची कोन अछि, आमे केते को कहंती कोन ईट नै के, केते कहंती टेक, ताकू टिके आमे टिके हाई फाई अरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश रे कहले कोन प्लीज हाफ, हाफ माने कोन, एटी कोन हला हाफ माने, हाफ माने कोन हला झियो कह, देखो म आउ थरे कहूची, मने कर मु किछि तमको खाइबा को देबी हला, मु कोन कहिबी ईट, ईट होची कोन एटा टिके गोटे सेंटीमेंट को हट करे, ईट की टेक, आउ टिके आमे एडजेक्टिव लगे दबा प्लीज टेक, प्लीज ईट, से एडजेक्टिव ता सेंटेंस ता कोन करे ग्लोरीफाई करला, सही सेंटेंस ता को आउ टिके अरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश रे कहले हाफ 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 हाफ, बुझुछ भल लागुची, हार्ट को भल लागुची, भल लागुनी, माने कर मु तुम कहबी ईट ईट, हाफ हाफ, प्लीज हाफ, कोटा भल लागिला, हां हां, हाफ ता भल लागिला ना ईट ता भल लागिला, हाफ ता भल लागे, सेटा होची अरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश रे जाय, एठी शेप ता सेही भली यूज होई, से एठी कोन होची फादर इज हैविंग ए शेप, ताकू जदी ऑर्डिनरी सेंस रे कहि दै थांते कोन कहि थांते, आमे जदी ऑर्डिनरी इंग्लिश रे ताऊ कहि थांते कोन कहिबा फादर इज सेविंग, नै कि फादर इज सेविंग, फादर इज सेविंग गोटे हमर ऑर्डिनरी इंग्लिश रे जाउची, ए ले मैन कैन स्पीक, फादर इज हैविंग ए शेप मान सही सेंटेंसेस ता गिव्स ए बेटर सैटिस्फैक्शन इमोशनली एंड टू द ब्रेन, ब्रेन को हमर गोटे सैटिस्फैक्शन दोउची, हाउ अरिस्टोक्रेटिक द सेंटेंस इज, अंडरस्टूड हला, तापर हला बट ही यूजुअली गोज फॉर ए वॉक एट दिस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मदर, माने क्वेश्चन ता बुझिलो ना बुझिलेनी, देखा आउ थरे पैराग्राफ पढो, द टाइम इज 8 PM हला, कंसंट्रेट करी सुनो, एवरीवन इन योर फैमिली इज बिजी, एवरीवन इन योर रेस्पेक्टिव फैमिलीज, तमे समस्ते तम फैमिली रो बापा मां को पिक्चर टा को यू टेक इट योर ब्रेन, but each person is doing something which is different from what or he or she usually does at this time. Each person in the family, father, mother, brother, sister, grandmother, everybody, they are busy in their respective works. The member of your family including yourself, that means everybody, they are working, everybody, father, mother, grandfather, uncle, aunt, including you, are listed below. So here down the questions are, write what each one of them is doing and also mention what they usually do at this time. Means what we have to do, what they are doing and what usually they do. So that means this paragraph will be teaching what, आमे कौन पढ़िबा ए पैराग्राफ रे, से कहिला ए जो पैराग्राफ रे इन योर फैमिली, तुम परिवार रे बापा माँ भाई भौणी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एवरीबॉडी दे आर डूइंग सम वर्क, आउ यूजुअली दे आल्सो डू सम वर्क, समान किछि करंती आ किछि करूछन, तेणु एठी कहूची हमकू एगुडा को जोडा दिया हाइची फादर मदर माय अंकल माय ऑन्ट माय सिस्टर माय ब्रदर, यू हैव टू फिल अप, ता माने इनडायरेक्टली कौन से चाहूची ए पैराग्राफ, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बुझिलो बुझिलो, तो एई भली तमरो तळे एग्जामिनेशन हबो एई भली क्वेश्चन आसीबो, आ एई समय रे लाइफ रो दिस इज द ओनली टाइम, क्लास 10 पर्यंत जहा जाईची जाईची, एठी तमे अपॉर्चुनिटीज पाइचो, एठी सिखि जिवो, एठी सिखिले थ्रू आउट योर लाइफ मन रहइबो, केते बेले भूलिबो कहिथिली, जदी पागला हे जिवो नहले ब्रेन टा फाटी जिवो, नहले से लोक मरि जिवो, नहले once you understand throughout your life it will be there in the brain cell भितर से रहिथिबो हला. So now my uncle, जेमती हमर फर्स्ट सेंटेंसेस टा हेची
father is having a chef but he usually goes for a walk at this time सेमती mother समस्ते गोटे गोटे नुआ नुआ सेंटेंस फॉर्मेशन कर मदर ऑर्डिनरी सेंटेंस हो कि हमर टिके हाई फाई सेंटेंस हो जो माने न बुझी पारुथिवो पचारिवो फादर इज हैविंग ए सेव माने बापा को पाखेर सेटा सेव नहीं तारो इनडायरेक्ट जनरल ऑर्डिनरी मीनिंग होची फादर इज सेविंग राइट नाउ ऑलराइट बुझिला जिया तमे बुझिला बुझिला हाउ तापर नेक्स्ट मदर कुह जदि गोटे दुईटा है जिवो तापर करि देबो आउ किछि प्रॉब्लम हबने मदर कोन करिबा मुटे कहि दउछि मदर इज कुकिंग नाउ कमा देलो but usually at this time she goes to temple हे गला mother is cooking now हमर सेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे गला but usually in this time she goes to temple एठी आसला प्रेजेंट सिंपल अब फास्ट आए गला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ऑलराइट ना कहरा आउ किछ प्रॉब्लम रहला तापर नेक्स्ट को जा अंकल माय अंकल अच्छा आउ के कहबो हमर जे केत परसेंट थिला 93 कोट पास कलो अच्छा आईसीएस रु केत जण अच्छा आईसीएस को स्कूल हां सेंट एंथोनी नुआ बाजार सीबीएस रु केत जण अच्छा कोट जा अपेक्स तमरा विवेकानंद आउ तम आउ सब रहिला हमरो ओडिया मीडियम सब बेसिक अच्छा हाउ ठीक है तापर जिबा माय अंकल के कहबो को जे कहबो जे कोनसी गोटे जे कोनसी सिंपल सेंटेंस गोटे कहिले so that you will be having courage for other questions कौन प्रॉब्लम होची लाज लाज लागुची ना बुझिया प्रॉब्लम होची कहिलो जे होटे हां कोहा my uncle is taking अच्छा then but usually अच्छा आउ के तमे कह जा कह गोटे कह फिर बसी बसी कह बसा कह ओके वेरी गुड आउ so I think almost all of you understood करि परिबो सब घरे करिवो हां तापर ऑनलाइन में सर किछ सुमन दीपंकर बुझियो छी तांको नाटा जानले हां 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 दीपंकर अच्छा सुमन वेणुधर एरा अच्छा आशीष अच्छा सुशांत अच्छा दीपंकर बुझिला सुमन वेणुधर अच्छा so now हाँ सर so like any problem what no if, sir so you understood no everything sir you can do it अच्छा now let us go to my sister my sister is watching TV but usually हाँ अच्छा एठी सिख रीड सुने हैं आमे जनरली जो एप्लीकेशन लिखू ना नहीं आमे कौन लिखू माय डॉटर इज रीडिंग इन सेंट एंथोनी स्कूल हाँ लिखू ना नहीं सेटा रीडिंग में रीडिंग माने मु वर्तमान जो बही धरी पड़छि सेटा माय डॉटर इज स्टडीइंग हला बुझिला स्टडीइंग हला स्टडीइंग और रीडिंग रे देयर आर हेल एंड हेवन डिफरेंस so now you understood what is studying what is reading alright मु वर्तमान जोटा पढुछि सेटा हला रीडिंग अच्छा माय ब्रदर आशीष
सुमन अच्छा आउ के कहबो माय ब्रदर लगे हाँ कहला माय ब्रदर लगे गोटे प्रेजेंट प्रोग्रेस सेंटेंस कहला My brother playing game, but usually he reading. but usually My brother is हाँ playing he game goes to हाँ very good he goes to park every day park every day. अच्छा आउ कार किछि प्रॉब्लम रहिलानी घरे याको सब करिवो हला तापरे कार किछि डाउट रहिला सुनो जदी डाउट रहिला मु तुमको आगुरु कहूची दिस इज द ओनली टाइम टू गेट इट क्लियर एई समय क्लियर कर देले तुम लाइफ बनि जबो आमे सब पिला कोन करन एई समय भूल करन हला कि जेमती से जो सेविंग रो गोटे अरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश में कहिले हाब रो कहिले हला माने करो आमे जणको एठी धर गोटे मीटिंग हो कि गोटे पार्टी हो हला कि जणको घर को आमे इनवाइट करछे गेस्ट मान को आमे जदी से गेस्ट माने कहबा इट इट राइस दाल यू इट इट खराब लागियो तक खराब लागियो ने किंतु लोक कहंती काहे लोक कहंती से फीलिंग ता आसे ना आमे सेही लोक को कहबा प्लीज हाफ 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 हला से हाफ ता कमांडिंग वॉइस रे जीवनी पोलाइटनेस रे जीव प्लीज हाफ हला से प्लीज हाफ ता गोटे इंटरनल सैटिस्फैक्शन दिए हले तापरे नेक्स्ट को जीवा एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस हला देखो बुक आनिच समस्ते सब टेबल रे बुक अछि we usually have a football match in our village every Sunday but this Sunday we are not having any matches he usually avoids going to the library but he is going there regularly this month as he is preparing for an examination the use of the हेलो ए प्रश्न एबे मु टिके क्लास रे अछि तमे टिके राति की करियो हला 9टा 9:30 बळको हां हां देखा पिला the use of present progressive in these examples indicate that some activities going on is in progress and that it extends over a period of time including now the moment of speaking expressions such as nowadays this month these days are used to refer to the period of time during which the activity takes place it is understood however that the activity which is taking place is only temporary it is not normally permanent in this sense the present progressive differs from present simple which refers to relatively permanent activity or state fill in the blanks space below using appropriate forms of the verbs in the bracket एटा बुझिलो फर्स्ट सेंटेंस ता देखिलो सेक्शन 2 we usually have a football match in our village every Sunday एटा हमर गला सिंपल प्रेजेंट रे तापर नेक्स्ट ता गला but this Sunday we are not having any matches तार सेकंड पार्ट ता कोथरे गला सिंपल प्रोग्रेसिव रे गला फर्स्ट पार्ट it was in simple present second part it is converted into present progressive or present continuous now like whatever it is given we have to continue as per the instruction our neighbors dash go to Puri every winter goes to Puri but this winter they are dash to Sambalpur next my father generally dash the bus but today he dash to work तामाने एगुडा को करि पारिबो आ किछि पढिबार नै हला ना कार किछि प्रॉब्लम अछि ना के लाज करछ तमे बुझिलो एपड दे नै जे लाज करियो मु जानि देबे हमें एक्सपीरियंस लोक लाज एठी करबनी छोट पिला रे
आउ स्कूल रे वेरी क्लियर जा इंग्लिश क्लारिटी है नथिबो काहे क्लारिटी हुए ना स्कूल रे टीचर जानती किंतु से एक्सप्रेस करि पारंती तमर साइकोलॉजी को से जानि पारंती जे पिलार प्रॉब्लम कोठी रहला तेणु से माने नॉलेज थाए किंतु एठी तमे यू हैव गॉट एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी तेणु एठी जहां डाउट थियो एउटो क्लैरिफाई कर दे थ्रू आउट लाइफ से ब्रेन रे रहिबो एक्टिविटी 4 जिबा imagine that you have an examination next month you have an examination next month बुझिगले सेंटेंस रा मीनिंग you are working very hard for your examination and have been forced to change your daily routine have been forced इट कोन हला सेंटेंस टा वॉइस चेंज हे गला हला वॉइस चेंज हला you have been forced suppose you have forced you have been forced suppose you have taught माने कोन तमे पढैछ you have been taught माने तुमको पढ़ा जाई अछि देखु जो डिफरेंस केमति आसुची टिके लिटिल माने कोन गोटे वर्ड रे हेल एंड हेवन डिफरेंस आसी जाउची describe 7 things that you usually do and the things you are being required to do now बुझला इठी से कहला describe 7 things सातटा जिनिस कहिबो that you usually do तमे जोटा रेगुलरली घरे करो I get up early in the morning हला then I go to park for morning walk I eat my breakfast एगुडा होची जनरल everyday regular routine work and the things you are being required to do now देखो एटी केम सब वॉइस चेंज होची the things you are being required एटी being ता वॉइस चेंज हे गला सब पढ़िबा in due course of time तमे धीरे धीरे एटी सिखो you can use expressions such as these days nowadays this month this तमने एबे तमे जो सातटा सेंटेंसेस लिखिबो एई वर्ड गुडा को लिखिबो फॉर एग्जांपल मु गोटे कहूची सुनो these days अछि these days हला these days I go to coaching center at 4 p.m. comma but usually at 4 p.m. I was sleeping at home तम प्राय सब एई समय के सोई था के टीवी देखु थांती ता माने बुझी गलो तेणु वर्तमान जो सातटा सेंटेंस एट फर्स्ट देछि I normally get up at 7 o'clock but I am getting up at 5 a.m. these days बुझी गलो समस्त खाता रे पांचटा सेंटेंस कर दियो खाता रे करो तम खाता सब आनी तो करो दीपंकर आशीष यस सर अच्छा तमे एटा करूछ पेज नंबर 21 एक्टिविटी 4 करूछ तो सर मो पाके बुक किछि नै सर बुक नहीं अच्छा ठीक अछि सर अच्छा सुशांत तमर बुक अछि सुमन मो पाके खाता लिखिबो अच्छा वेणुधर तमर बुक अछि वेणुधर Yes, sir. तमर बुक आज्ञा, पाखर sir. अछि पेज 21 हाँ, sir. एक्टिविटी 4 टा करो हाँ सर समस्ते एठी कटक पिला तम घर कटक माने ओरिजिनल कटक पिला अब रहउछ एठी एई +2 परे रहउछ रेवेन्सरा एडमिशन अब एडमिशन कोठी हां माने
समस्ते निजे लेखिले देख कॉन्फिडेंस पड़िबो तुमको सैटिस्फैक्शन लगिबो जे आई हैव लर्न मु सिकिछि कॉन्फिडेंस आसीबो हैला लेख केतेटा सेंटेंस पांचटा सेंटेंस लिखिबो त हमर झे बही नहीं आ? नहीं गोटे तो से बही रे हेइची आ चारिटा तमे लिख कंप्लीट अच्छा गोटे दीटा लेखा लिखिदेल अच्छा यू से नंबर 2 ओके